हमारी जो टीम होगी लाइक क्रोम की या ऑडी की, उसमें वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मटेरियल करके आई गेस. So in that material you will find out the these recordings. Okay. Okay. So we'll start with Cauchy's mean value theorem. I hope you can see the screen, everyone. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So today's date is 10th. So I'll just write down Cauchy's mean value theorem in short here. This is also called as CMVT. CM. Please mute yourself, everyone. Keep your mic on mute. Okay. If you remember, in a Cauchy's mean value theorem, we are having one function. If fx is defined in some closed interval AB, and if first condition, what is the first condition? Not fx, sorry. We are having two functions. In case of Cauchy's mean value theorem, we are having two functions, fx and gx. Okay. GX. Yeah. So what we are having in what is the first condition for Cauchy's mean value theorem? Continuous. कौन कंटिन्यूस होना चाहिए? F of x and f of g should be continuous. Yeah. So both f of x and f of x and g of x both are continuous. So f of x and g of x are continuous. Both are continuous on closed interval AB. Correct? What is the second condition? Both should be differentiable in Differentiable. open Both are interval differential Yeah, in open interval of interval. AB. yeah, f of x and g of x both are differentiable. In open AB. Differentiable on open interval. Okay. Condition satisfied. One more condition is there actually. That is only for denominator should not be 0. So g of a should not be equal with g of b. If these three conditions satisfied, then there exist. Some c. We are going to have at least one c in the open interval AB such that. You remember the condition? Yes. What F is dash it? upon Yes, F sir. dash of C upon F G dash dash C C, G G dash dash F dash of C c upon is equal to G of G G dash of dash C. of C. is equal to what? F of B minus F of A. F minus B F of minus F A. of F of A. b minus f of a. G of B Upon minus G of B. G minus G of A. तो see ये जो condition दी है, this condition, the third condition that you can see, g of a is not equal to g of b. If they are equal, तो ये denominator zero हो जाएगा. Are you getting? अगर वो equal हो जाते हैं तो denominator zero हो जाएगा. That's why that condition should be there, that g of a should not be equal with g of b. So this is the condition, or we can say this is the kind of C that we are going to have. Okay. Basically, geometrically, what this indicates, यहाँ पे ध्यान दो. Geometrically ये indicate क्या करता है? Suppose f of b minus f of a, अगर आपके पास फंक्शन f of x में दो पॉइंट है b and a, such that suppose इसका डिफरेंस कुछ तो 6 है, suppose इन दोनों का डिफरेंस, and g of b minus g of a, that means you are having 2 points on the function g, in the function g, such that उनका डिफरेंस 3 है. Okay, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस रेशियो?
किस 2:1. 2 sir. 2:1. 2:1. राइट, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, ऐसा एक तो पॉइंट मिलेगा सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी डैश ऑफ सी। कैन आई से लाइक दिस? Yes, sir. Yes. तो दिस इज एक्चुअली द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। दैट मीन्स ये क्या कहता है, अगर आपके पास ये जो एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए इनका रेशियो अगर 2 है, इफ दिस रेशियो इज 2 वॉट एवर इज द नंबर, तो हमें एक तो पॉइंट सी मिलेगा ऐसे सच दैट एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 2 टाइम्स जी डैश ऑफ सी होगी। ओके, दैट इज द लॉजिक और वी कैन से द आइडिया फॉर द कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कोई आपको पूछने नहीं वाला है, तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ओके, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर एक्स्ट्रा थिंग्स ओवर हियर, you can note this. Can anyone tell me, can we derive mean value or Lagrange's mean value theorem from this? अगर मुझे Lagrange's mean value theorem derive करना है इससे, तो मैं कैसे derive करूँ? Anyone? Do you remember Lagrange's mean value theorem? F dash of C is equal to of B minus F of B minus F of A F of A upon Upon B upon minus B A. minus B minus A. तो मुझे क्या करना है, इससे ये डिराइव करना है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस मुझे ये फाइंड आउट करना G of x equals to x. है। वेरी गुड, करेक्ट। तो अगर ध्यान दो यहाँ पे, अगर आपने ये दोनों ठीक से देखे तो ये वैल्यू 1 हो रही है, राइट। दैट मीन जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड जी ऑफ बी बी होना चाहिए एंड जी ऑफ ए होना चाहिए ना। आर यू गेटिंग दिस वन व्हाट आई एम सेइंग? yes sir. Yes. Yes sir. Yes, sir. मीन जी ऑफ बी कहाँ जाना चाहिए, बी को ही जाना चाहिए। ए कहाँ जाना चाहिए, ए को ही जाना चाहिए। तो कैन यू टेल मी वो फंक्शन क्या होना चाहिए जो बी को मैप करेगा और एक्स ए को ही मैप करेगा? वो फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आर यू गेटिंग? Yes sir. प्रत्येक सगळ्यांना मी काय म्हणतोय, जर तुम्ही sir. जी ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू एक्सच जर घेतली तर जी ऑफ बी बी होईल अँड जी ऑफ ए होईल अँड जी डॅश ऑफ एक्स 1 होऊन जाईल ना, राईट? तो राईट डाउन हियर लॅग्रेंज सॉरी Lagrange's mean value theorem. Should I write down LMVT? Mean value theorem is a special case of CMVT, that is Cauchy's mean value theorem. Okay, because if we put g of x, जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसको अगर मैंने x ले लिया, तो if g of x is equal to x, this implies g dash of x is equal to 1, g of b is equal to b, and g of a is equal to, okay, so हम इजीली Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके Cauchy's मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके हम Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, it is called as in mathematical word we can say that we can easily deduce Lagrange's mean value theorem from Cauchy's mean value theorem. Okay, and this is the second note. LMVT is also called as mean value theorem. चलो राइट इट डाउन। आई थिंक लास्ट टाइम हमने ये लिखा था, am I right? Yes, sir. Last time we have Yes, yes. written the statement of Cauchy's mean value theorem. Yes. Just write down the note, in notes लिखो, everyone write down the notes.
डन एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो एक सिंपल एग्जांपल करेंगे हम मीन वैल्यू थ्योरम का एंड write down the example of verify CMVT or e raised to x the interval comma. तो दिस इज सिंपल दो फंक्शन है हमारे पास वी आर हैविंग टू फंक्शन ओके किसी को आप किसी एक को f of x बोलो किसी एक को g of x बोलो तो लेट आई एम टेकिंग द फर्स्ट फंक्शन एज f of x तो लेट f of x इज इक्वल टू e raised to x and g of x is equal to e raised to minus x and these two functions are defined on a comma b. Okay, is it fine up to this everyone? No doubt? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Can you tell me something about continuity of f of x and g of x? Are they continuous? Yes, sir. Yes, sir. Why they are continuous? E raised to x is a continuous function. Because it is exponential, right? E raised to x is always continuous everywhere. It is continuous everywhere. In fact, e raised to minus x is also continuous everywhere. Okay? Because e raised to x की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है तो e raised to minus x भी जो है वो 1 upon e raised to x होगा ना ये भी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम कब होता अगर ये जीरो हो जाता ना तो प्रॉब्लम होता बट remember that e raised to x value never e raised to x never takes the value 0. Okay, so both the functions are continuous. The first thing is f of x and g of x, both f of x and g of x both are continuous. Continuous on close interval. Are they differentiable? Yes. Q? Sir. Yes, sir. Q differentiable है. Yes, sir. It's differentiable. Q differentiable. Why they are differentiable? Derivative e raised to x of e raised to Again, x. you can give the same reason. So they are Exponential continuous functions are also. differentiable everywhere. Even आप इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो ना. What is f dash of x? E raised to x ही होगा. E raised to x Power x C dash of E x raised minus e power minus x. minus e raised to minus x. एग्जिस्ट हो रहे हैं ना दोनों डेरिवेटिव. f of Yes, x का sir. डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो गया एंड g of x का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो गया. So can I say therefore f of x and g of x both are differentiable. Both are differentiable on what? Close or open? Open. open. Close. Open. Open interval. Okay. Now we want to verify. हमें verify करना है CMVT. तो what you have to do? We have to check one point C. एक point हमें लेना पड़ेगा C, such that उसके लिए वो condition satisfy होगी. Okay. तो consider C belongs to AB. Actually ये हमें prove करना है. We can't say that. To consider f dash of C upon. Do you remember the condition? F dash of C upon G dash of C is equal to what? F of F B of minus a F minus f of a F F of of F of B B minus F upon of A upon G of B minus G of B. of upon b minus g of a. upon G of B minus G of. Okay. Now already हमने f dash of x निकाला है देखो दिख रहा है यहाँ पे f dash of x. Can you tell me f dash of C क्या होगा? E raised to c. Is it e raised to C? Sir, raised e to का power. Because Yes, f of yes, f dash of x e raised to x है तो x के जगह C डाल दो. And what about g dash of C? ये देखो ये है आपका g dash.
Sir, e का power minus minus x. E to power minus Minus, is it minus e raised to minus e minus c? power minus. Yes, sir. Yes. And what is f of b? f of a आपका e raised to a है ना? E raised to B. ये आपका और E ये E raised to b, sir. FB. is it e raised to b minus e raised to a? E raised E raised to Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Upon can I say it is e raised to minus b minus e raised to minus a? Yes, sir. I hope all of you are getting no doubt here up to this. No, sir. yes तो लिसन हमें क्या करना है, ये c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कुछ भी करके वी वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ c. ओके, तो ध्यान दो, डू यू रिमेम्बर दैट अगर किसी वेरिएबल की पावर और किसी की पावर अगर नेगेटिव होती है तो कैन इट बी रिटन एज 1 अपॉन e रेज़ टू c? yes. Yes, sir. So negative power it is in the denominator, right? So ऊपर जाएगा माइनस साइन, अगर इफ आई टेक इट इन द न्यूमरेटर कैन आई राइट डाउन दिस एज माइनस e रेज़ टू c इनटू ये ऊपर चला जाएगा ना e रेज़ टू प्लस c. Yes, sir. Yes, yes. So see for example what I want to tell you is 1 upon e raised to minus c है, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 upon e raised to c, तो will it become e raised to c simply ऊपर चला जाएगा, right? Okay, equal to what about this side, is it e raised to b minus e raised to a upon, इसको कैसे लिखूं मैं e raised to minus b को, should I write down 1 upon e raised to b minus 1 upon e raised to a? Are you getting everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, can you tell me e raised to c into e raised to c क्या देगा आपको? E raised to 2C. E power 2c. Yeah, it is actually e to the power c का square हो जाएगा ना. But I hope you know the indices rule. तो indices rule मालूम है सबको, e raised to a into e raised to b को हम ऐसे लिखते हैं, ये एडिशन हो जाती है ना पावर की. म्यूट करो एवरीवन, म्यूट योरसेल्फ. बहुत आवाज आ रहा है किसी का तो. म्यूट करो एवरीवन. नहीं. नाही कांदा म्हणे ते कशाचे. Okay, can you see the screen everyone? Yes, sir. Yeah, तो can I write it now e raised to b minus e raised to a, और इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो can I क्रॉस मल्टीप्लाई if I do it, is it e raised to a minus e raised to b upon e raised to b into e raised to a, is it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm just simplifying it, okay, but can I cancel out this term and this term, ये term और ये term cancel करूँ मैं? Yes, sir. उल्टा है देखो, खाली माइनस साइन का फर्क आएगा, माइनस Sign. मल्टीप्लाई करना, right? Only there is a change of minus sign. Okay, so can I call this as e raised to minus 2c minus e raised to 2c? Are someone is there who is continuously talking? 1101. No, you can't talk for this whole lecture. I disabled your mic. Now keep this thing in mind. No one is going to talk in between. Okay. Those who are going to talk, I'm going to disable their mics. Okay. Make it sure your mic is mute. Okay, fine. So when we cancel out, you are going to have this minus sign will remain. Why minus sign? Because ये उल्टा करना है ना, maybe e raised to b minus e raised to a. तो ये minus sign आ जाएगा, and it is e raised to b into e raised to a. It will be in the numerator. Can I cancel out that minus sign from both the side? ये minus और ये minus cancel कर देता हूँ, and finally I'm going to left with e raised to 2c is equal to. Should I write it as e raised to b plus a or a plus b? yes sir Indices rule. Yes, sir.
Okay. Yes, So sir. if I take the anti-log on both the side, C is equals or if I take the log on both the side, what you're going to have? 2c Can I- equals to b plus equals to A a plus B. plus b or b plus a. So Yes, from sir. here, can I say c is equal to a plus b by 2? Yes. yes. But my question is it belongs to the interval a comma b? Yes, sir. Yes. Why? Yes. Because ये midpoint है ना उसका. Sir. Sir. Is it a midpoint of the interval a comma b? दोनों के बीच exactly middle में होगा देखो ये. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So can I say LMBT, sorry, CMVT is verified? Yes, sir. Verified. Yes, sir. Yes, I sir. hope you're getting the middle part. ये जो हमने solve किया है सभी. I hope it is clear. If you have any kind of doubt, difficulty, please ask me. Write down the problem. All of you write down the problem. I tried to mention each and everything there. So please, still if you have any doubt, please ask me. Hello, sir. हाँ, बोलो. Sir, where use this theorem in daily life? Sorry. Can you repeat? Sir, where use this theorem in daily life? This theorem, actually, sometimes we need to check out whether the given function is increasing or decreasing. In that case, we can use mean value theorem. So there are applications. There are applications that there are no not few more examples of applications of this, but there are very restricted applications of this thing. But majorly, we use this theorem to find out increasing and decreasing function. And sometimes also, like if you remember, mean, mode, and median. These are the statistic word actually. Average, mode. So to sometimes to find out that also we make use of CMVT. Even sometimes if you want to find out the expansion of the function in powers of x, that also we can do with the help of mean value theorem. Daily life we can't say, like for example, um, we can say sin x. Can you tell me what is sin 30? Anyone? 1 by 1 2. half. What is sin 60? Half. 1 by 2. Sin 60? Root 3 by 2. Sin 90? Sin 90? 1. 1 1. by 1. 1. 1 But 1 if I 1. ask you, listen, if I ask you what is sine of 3, can you tell me the answer? No. No. Why you can tell me the answer of 30, 60, 90, 45 and all? Because you're used to with that, and we have some formulas for it, and we can easily do that. But sometimes we need to expand a function in powers of x. For example, अगर मैंने आपको एक expansion ही दे दिया sin x का, sin x is equal to something like x minus x cube upon something वगैरह वगैरह, एक expansion दे दिया, और मैंने कुछ भी वैल्यू पूछी आपको 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू, तो उस एक्सपांशन में x की वैल्यू पुट करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो दैट इज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, जहाँ पे हम ये एक्सपांशन फाइंड आउट कर सकते हैं एक फंक्शन का, किसी भी फंक्शन को हम एक्सपांड कर सकते हैं इन पावर्स ऑफ x. दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. Hello, sir. Am I audible? Yes, yes, yes. Sir, I have a doubt. What about third condition, that G of A is not equal to G of B? Yeah, so that is not here, no? Actually, it is not equal to 0. You can write down here where I have not mentioned it. It's good. We have to mention it. So if you find out G of B and G of A here, G of B minus G of A, what will be G of B? A to the power minus E B. to the power minus B and E to the power minus A. Okay. So if you simplify it,
are you going to get something like e raised to a into e raised to b upon e raised to a minus e raised to b? The Yes, sir. denominator part ये वाला ये आ जाएगा, is it? No, उल्टा होगा बेटा. वही आएगा. It will be like e raised to b minus e raised to a. So yeah, it will be like e raised to a minus e raised to b upon e raised to a into e raised to b. Is it correct? Yes, sir. Yeah. But Yes, sir. can you tell me इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? e raised to a बड़ा होगा या e raised to b बड़ा होगा? What do you think? E raised to e raised to ए बड़ा होगा ना, ई रेस टू ए. ए तो देखो ये वैल्यू, कैन आई टेल मी, कैन यू से व्हाट कैन यू से अबाउट e raised to a and e raised to b? sir, e raised to b बड़ा होगा. तो ये देखो, द फर्स्ट थिंग इज ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगे, e raised to a and e raised to b भी. इनफैक्ट ऊपर वाले भी e raised to a and e raised to b भी जो बड़े होने वाले हैं. ओके, एंड सी वॉट एवर इट मे बी, e raised to b बड़ा होगा, e raised to a बड़ा होगा. E raised to b. रेस टू ए सर. E raised to b. नहीं, ठीक से देखो, E e raised to a बड़ा होगा या e ए raised to b? होगा ना ये बड़ा होगा ना. सर, ए बड़ा होगा. ए सर b. E raised to b. ए कॉमा बी, ये इंटरवल है ना हमारी, तो ए छोटा है बी से, राइट? तो ए अगर ए छोटा है तो e raised to a भी छोटा होगा ना, e raised to, Yes, sir. राइट? तो दैट डजंट मैटर एक्चुअली हियर, बट ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? Negative. पॉजिटिव आएगी. नीचे वाली भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आएगी ना. अरे नेगेटिव आएगी ना. Yes, sir. Negative. बट विल इट, ये जीरो आएगी क्या? दैट इज माय क्वेश्चन. नहीं sir. 100% No, sir. 100% No, ये sir. जीरो नहीं No, sir, आएगी, तो नहीं बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो वैल्यू लेता ही नहीं है. तो ये सभी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होने वाले. ओके, ओनली वो सब्ट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव आ गया, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव. वी डोंट बॉदर अबाउट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. व्हाट वी बॉदर अबाउट इज वेदर इट इज जीरो और नॉट. तो 100% इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. So it's good. We have to take out actually, but if you simply mention, it's fine. अगर आप simply mention करते हो g of b minus g of a is not equal to 0, that is enough. Okay. But Thank you, sir. Thanks for reminding me. Finish everyone. Yes, sir. Yes, Should sir. we go to the next problem? Yes, sir. 1 minute. Now second problem actually is exactly same. Only we are going to change the formula functions to verify CMVT. Verify CMVT. X is equal to x raised to 4. G of x is equal to x square. In the interval. So it is exactly same. I'm not going to do this. So I'm going to give you this problem for as a homework. Can you do it? Yes, Yes, sir. sir. Exactly sir. on the Yes, same. sir. कुछ नहीं है. आपको क्या करना है? f of x दोनों continuous है क्या? Both are they continuous? Yes, sir. Continuous. Yes, sir. Yes, sir. Why continuous?
Polynomial function. Polynomial. function. Polynomial function. Are continuous. Are they differentiable? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों का डेरिवेटिव आ जाएगा देखो 4x क्यूब एंड 2x डिफरेंशिएबल भी है और बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल आल्सो दे आर डिफरेंट देन उसका डेरिवेटिव निकालो फाइंड आउट c कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c Yes, sir. शुड आई टेल यू द Yes, sir. आंसर Yes, sir. c की वैल्यू जो है आई जस्ट गिव यू द हिंट वो जो c की वैल्यू है वो ऐसी आती है अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय ये c की वैल्यू आनी चाहिए चेक आउट ओके एंड ये बिलोंग्स टू ab तो डोंट वरी okay so I hope you all can do this write down this problem and today you are supposed to solve this okay so that's about Cauchy's mean value theorem then Lagrange's mean value theorem and the Rolle's theorem. चार्जिंग झालं नव्हते मला शाळेत जायला लागणार. Hello. Okay, so now we are going to see some MCQ based on this. Okay, I'll just close this screen. If you are done, should I close the screen? Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So MCQs. I'm not going to solve any question. I'm just going to read it out. आपको आंसर देने मुझे एक एक करके. Okay. The first question is Rolle's theorem is a special case of. Lagrange. Lagrange's Lagrange's mean value theorem. Special case of Lagrange's theorem. Very good for 1 mark. Lagrange's mean value theorem is a special case of. Cauchy's mean value theorem. Cauchy's mean value theorem. हमने देखा है जैसे रिमेम्बर यहाँ पे अगर f of a and f of b अगर सेम हो जाता है इन Lagrange's mean value theorem तो हमें Rolle's theorem मिलता है ना एंड यहाँ पे भी अगर g of x की वैल्यू अगर x हो गई then we are going to get the Lagrange's mean value theorem. So that means Rolle's theorem is a special case of Lagrange's and Lagrange's is a special case of Cauchy's mean value theorem. Okay. Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है. मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल भी करेक्ट हो सकते हैं. Rolle's theorem ensure that there is a ये पॉइंट चाहिए प्रिंट हो गया ये पॉइंट हो गया. So Rolle's theorem ensures that there is a point on the curve the tangent at which is parallel to x-axis. Is it true? Yes, sir. Yes, sir. True है, sir. True Yes, है, sir. sir. Yes. Yes, sir. It true है. Lagrange's mean value theorem ensures that there is a point on the curve the tangent at which is parallel to y-axis. No, sir. False. No, sir. No, sir. No, sir. False. ठीक है. No.
Cauchy mean value theorem can be deduced from Lagrange's mean value theorem. क्या बोल False है रहे sir. कि False, sir. False. 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 That means they are saying कि Cauchy mean value Lagrange's No, mean sir. value theorem का False. special case है, ऐसे है क्या? No, sir. No. Sir, false. No, sir. False. And the last one, Rolle's theorem can be deduced from Lagrange's mean value theorem. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes True. sir. Yes sir. Yes, True. sir. So which Yes. will be the correct A answer? and D. A A and D. A A and D. I hope all of you are getting this. Yes, sir. Yes, sir. Then if f of a is equal to f of b in a Lagrange's mean value theorem, then it Rolle's becomes theorem. Rolle's theorem. Rolle's theorem. Rolle's theorem. Rolle's theorem बन जाता है ना वो? Theorem is also known as B. Lagrange. Lagrange's theorem. Lagrange's Lagrange theorem. theorem. Lagrange बोला theorem. Lagrange's mean value theorem को mean value theorem भी बोलते हैं और simply mean value theorem को Lagrange's theorem भी कहते हैं. Okay. Yes sir. Lagrange. Now this is important. Okay. Generally आपकी जो एग्जाम होगी MCQ की उसमें जो मोस्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी लाइक दिस. ये जो प्रॉब्लम्स होंगे जो अभी हम करने वाले हैं इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं. these are the important questions. फंक्शन क्या दिया है देखो, f of x is equal to 3 sin 2x. ओके, कंटिन्यूस दिया है, देखो कंटिन्यूस दिया है, डिफरेंशिएबल दिया है, सभी दिया है. हमें क्या फाइंड आउट, देन द बाय रोल्स थ्योरम द वैल्यू ऑफ c, हमें c की वैल्यू पूछिए. क्या करोगे बताओ, c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? F dash of C equals to 0. Equal to 0. वेरी गुड. तो रोल्स थ्योरम कहता है ना कि f dash of c is equal to 0. 0. So can you tell me इस f of x का डेरिवेटिव क्या होगा? 6 cos 2x. 6 cos 2x. 6 cos 2x. Is it 6 cos of 2x? Cos Yes, 2x. sir. Yes sir. बिकॉज sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x होगा और वो 2x का 2 तो वो 6 हो जाएगा. ओके, फिर क्या करेंगे हम, इस x के जगह c डाल देंगे. इज इट राइट? तो f dash of e, इज इट करेक्ट? f dash of c is equal to 0 होता है ना, तो दिस इम्प्लाई, कैन यू पुट सिंपली रिप्लेस x by c, तो कैन आई से 6 cos c, 6 cos 2c is equal to 0. Sir, Yes, sir. तो 6 तो 0 होगा नहीं, तो cos t 0 होना चाहिए. तो कैन यू टेल मी कौन से एंगल के लिए cos 2c 0 हो जाएगा? pi by 4. Pi by 2. Pi by 2. c की वैल्यू पाई बाय 2 होना चाहिए ना, पाई बाय 2 के लिए 0 होता है ना cos. All of you know that Pi by sin 4 के लिए. cos 90 is 0. So can I say from this that c is equal to pi by 4? Is equals to pi by Yes 4. sir. Yes, sir. Pi by 4. Yes sir. आ गया C क्या has. pi? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? c is equal to T. pi by 4. C. Pi by 4. Is it correct? All of you getting? Yes, sir. So do we have that option? Yes, sir. Get clear? ये प्रॉब्लम्स आपको ठीक से करने हैं. कितना टाइम लगा देखो, हार्डली लेस देन 1 minute you require to solve that if you know the concepts. Okay. No doubt in this, everyone? Yes. Next question. X is equal to x raised to alpha into log x. Okay. And f of 0 उन्होंने दिया है, ये important है. f of 0 is equal to 0 है. Then the value of alpha for which Rolle's theorem can be applied in 0 to 1. ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए वो अप्लाइड होगा? रोल्स थ्योरम के लिए कौन कौन सी कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है? Continuous Differentiable f of A Continuous, is equal to differentiable and continuous. F of A is equal to F of B. राइट. तो यहाँ पे ये जो चीज़ है उसके ऊपर ध्यान देना है आपको, क्योंकि हमें सी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हेल्प नहीं करने वाली अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बट वो जो थर्ड कंडीशन है ना एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये हेल्प करेगी हमें. तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होने के लिए ये भी एक जरूरी कंडीशन है कि एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 सेम होना चाहिए. ये इंटरवल है ना हमारा, इज इट? यस. बट एफ ऑफ 0 कितना दिया है उन्होंने? 0. कैन आई से दिस इज 0. और एफ ऑफ 1 क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज एफ ऑफ 1?
0. 0. Is it 1 raised to alpha into log of 1? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 1 raised to. Actually तो भी ये 0 ही होने वाला है ना. In fact, all the values will work. Because यहाँ पे देखो ये log 1 तो 0 ही होने वाला है ना. Yes, sir. Yes, sir. यस सर 0 होगा. अल्फा के लिए मैंने अगर जीरो भी डाला या -½ भी डाला या -1 कुछ भी डाल दो ये अल्फा की वैल्यू तो 0 ही बनने वाला है. तो दिस इज अ देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम. Yes, sir. थोड़ा अकॉर्डिंग टू मी all the values will work, all the answers are correct. सब 0 to 1 के बीच में होना चाहिए. हाँ या करेक्ट करेक्ट. तो ये 0 के 1 के ये तो ये चला गया, ये चला गया. नहीं ना, लेकिन ऐसी थोड़ी ना है. अल्फा के लिए कुछ कंडीशन नहीं है. सॉरी, Sir, option नहीं. कंडीशन अल्फा दिया है. D पॉइंट is नहीं है. not there. देखो, लिसन, अल्फा इज नॉट पॉइंट इनसाइड द इंटरवल. अल्फा इनसाइड 0 to 1 वाला भी पॉइंट है ही नहीं वो. अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. वो कहाँ पे मेंशन किया है कि अल्फा 0 to 1 के बीच में होना चाहिए? नो. I think this is a wrong question. सभी ऑप्शन आएंगे फिर. So alpha I guess it can take any value. Still I'll check out the answer, but I think they have given the answer as 0. Why they are thinking 0? Because 1 raised to 0 when you take it will become 1. And but doesn't matter. 0 इज इक्वल टू 0 होगा ना. लॉग Alpha log 1 की वैल्यू 0 है ना. log 1 तो 0 ही है. तो ये वो 0 होल by वैल्यू 0 होगी. सर 0 होगा x x fx is equal 0 to is 0. equal to 0 there. okay. I'll check out this. But I Excuse me, sir. हाँ बोलो. सब रोलेज थ्योरम इस पे सर वो अप्लाई नहीं होगा सर, क्यों? क्योंकि सर वो उसका आंसर 0 ही आने वाला है ना. तो फिर वो इन इसका बिटवीन 0 to 1 ना. कौन सी इसका आंसर 0 आने वाला है? सर वो अल्फा की वैल्यू कुछ भी डाली तो भी, क्योंकि log 1 इक्वल टू 0 होता तो है. दैट डजंट मैटर ना. अल्फा की वैल्यू कुछ भी डाली तो ये एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 सेम हो जाएगा. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना उल्टा, और हम अप्लाई कर हाँ पाएंगे. कंडीशन सेटिस्फाई. तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा. सर लेकिन ये बस हॉस्पिटल हमको सर थ्योरम आप से अल्फा सर की सेटिस्फाई हो जाएगा. क्या क्या? सर ये हॉस्पिटल्स थ्योरम में सेटिस्फाई हो जाएगा, वैल्यू इसका 0 आ जाएगा फिर. हाँ 0 आ जाएगा. निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव लेके. ये सर, ये सर. ठीक है, लेट मी चेक आउट दैट. ओके सर, ओके. कैन यू टेल मी डेरिवेटिव क्या होगा इसका? उससे कुछ चेक कर सकते हैं कि हम एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा इसका? x raised to alpha upon 1 by x टू अल्फा अपॉन एक्स plus log x into x raised to alpha minus 1. ऐसे आएगा ना ये? नहीं. अल्फा कांस्टेंट है ना. तो एक्स रेज टू अल्फा इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू log x इंटू एक्स रेज टू अल्फा का डेरिवेटिव होगा अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस 1. तो फ्रॉम दिस क्या होगा
x raised to alpha minus 1 you can take common, it will become 1 plus log x. 0 होनी चाहिए ना वैल्यू. Sir, alpha into log x ना. इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, ये मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन. आई एम डाउटफुल. ओके, ठीक है. We'll check out that question later on. What about next one? For which interval does the function x square minus 3x upon x plus 1 satisfy all the condition of Rolle's theorem? कौन सी कंडीशन, 0. कौन सी इंटरवल चलेगी हमें? A 0, comma. बी चलेगी क्या? व्हाट डू यू थिंक, बी चलेगी? ये डिनोमिनेटर जीरो कब होगा बताओ? -1. X x equals to minus -1. 1. तो इस बी इंटरवल में -1 है क्या? बी इंटरवल में Yes, नहीं sir. अपना है ना? है sir. है इस सर. इंटरवल में है ना? यस Yes, सर. तो अगर -1 की वैल्यू पुट करते हो वहां पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो ये इंटरवल नहीं चलने वाली है. आर यू गेटिंग? -1 इज नॉट अलाउड. 0 to 3 चलेगी क्या? यस सर. yes sir, yes चलेगी sir. सर. उसमें आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो फाइनल कंडीशन f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 3 है क्या नहीं. f ऑफ 0 कितना होगा? 0 हो जाएगा देखो, और f ऑफ 3 भी 0 हो जाएगा, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है. देन -1 तो है ही नहीं, तो आई थिंक 0 to 3 विल बी द करेक्ट आंसर. Yes यहाँ sir. पे क्या प्रॉब्लम होगा? यहाँ पे f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1.5 एंड f ऑफ 3 सेटिस्फाई नहीं होगा देखो. चेक f of a is not equal to f of b. हाँ, तो ये भी सर इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है लगता है. नो, क्या क्या फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं लग रहा है. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ना. एंड दिस इज अ डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शन. इसका इसका डिवीजन भी है ना, ये देखो इन दोनों का डिवीजन जो है ना वो भी एक पॉलिनोमियल ही आएगा. ओके सर. तो डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल मतलब अगर आप x स्क्वायर माइनस 3x को डिवाइड करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट अ पॉलिनोमियल ओनली. सो दैट विल बी कंटिन्यूअस एंड दैट विल बी डिफरेंशिएबल. ओनली द थिंग इज आपको लास्ट कंडीशन चेक करनी पड़ेगी एंड दैट विल बी f ऑफ 0 एंड f ऑफ 3. So that also it will be satisfied. So I think answer is A. Yes sir. सर Okay, सी. so these are some MCQ that we have just tried, but मैं सभी MCQ नहीं solve करने वाला हूँ. अगर मैं सब करूँगा तो आप सर क्या ग्रुप करोगे? पे So this सेंड will करो be your सर. first assignment. ध्यान दो, आपकी ये first assignment होगी. मैं आज आपको ये MCQ आपके ग्रुप पे ऊपर डालने वाला हूँ. I'm going to send this MCQs on your group. You are supposed to ओके सर. solve all the MCQs. Okay? उसका ओके डेडलाइन सर. होगा अप टू दिस फ्राइडे. आपको ये सभी MCQ सॉल्व करने हैं. हार्डली देयर आर कितने MCQ? तो इतनी है बस. एक पेज में. I'll send you this MCQs on your. Hardly I think there are 10 to 15 होंगे, not more than that. But you are supposed to solve that. Okay? मैं गूगल क्लासरूम बना दूंगा आज. गूगल क्लासरूम का आपको एक कोड भेज दूंगा, वो विद द हेल्प ऑफ दैट कोड आप ज्वाइन कर सकते हो गूगल क्लासरूम. ओके? ओके सर. या चलो, I'll take the attendance and just a minute. Division 1 2 3 4 5 6 सर 7. Just hold on, I'll just take the attendance 14 15 16 17 18 19 20
24, 25 absent. I'm talking Sir, about 24 present. Audi. Siddhi. Audi 24 present, sir. Yes, Siddhi is sir. there. Yes, sir. I'll make you present. यहाँ पे नंबर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे आपका अभी सर दिखाई वो एक्चुअली वो आपने टीम्स लॉगिन डिलीट नहीं हो किया गया मोबाइल से। सिद्धि अभी तक आपका ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है गेस्ट क्यों दिखाई दे रहे हो आप सर वो टीम्स ऐप मेरे मोबाइल से अचानक डिलीट हो गया था तो मैंने अभी टेम्पररीली ज्वाइन कर लिया है आज का क्लास तो अभी डाउनलोड करके लूंगी मैं ओके फिर से ओके लॉगिन करूंगी। डाउनलोड करके वो करो हाँ ओके हाँ यस सर। रोल नंबर 36 भी एब्सेंट है 37 38 39 रोल नंबर 40 ओंकार 41 42 श्वेता 43 44 44 45 ओके ये है ही नहीं 47 चेतन 51 52 53 54 Sanika is there 55 56 57 58 59 Sachin okay Chrome division 801 802 Ritik absent 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Priya Akshay 14 15 13 is there Akshay 24 25 26 27 28 29 30 31 53 853 रणदीवे राजकुमार 59 859 is not there 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 okay. Thank you everyone bye take care good day you can leave Thank you, sir. bye Thank you, everyone sir. yeah bye. Thank you, Thank sir. you, sir. Take care take care Thanks, sir. सर सर बोलो सर जो अभी जो आप क्वेश्चन रॉन्ग है बोल रहे थे उसमें अगर अल्फा वेरिएबल ले लें तो डिफरेंशिएशन अल्फा में इज कांस्टेंट अल्फा फिक्स है कांस्टेंट है सर हाँ बोलो सर अगर उसे ऐसे ले ले तो शायद क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है हाँ हेलो अगर चेन रूल फॉलो करे डिफरेंशिएशन में तो सॉल्व हो हाँ रहा हाँ है शायद से ओके मैं चेक करता हूँ एक बार ओके हेलो सर असाइनमेंट के लिए अलग से बुक करनी है क्या? हेलो सर कौन सी कंडीशन जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ ए ओके अभी आप लीव करो यू यू आल्सो ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम मैं भी ट्राई करता हूँ आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर हेलो सर हाँ बोलो अच्छा हैव यू मार्क अटेंडेंस फॉर yes 813 I mark you present 813 ना थैंक यू सर
यस यस। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।